Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Why do we need a parliament? And under this chapter we are discussing about the functions of the parliament. As we have seen, the first and the most important function of the parliament is to form the government, and we have discussed in the previous class how the government is formed or how the government is selected. So the function of the parliament which we are discussing is to select the national government. And in this regard, we have seen that the national government is formed by that political party which gets the majority of the seats in the Lok Sabha. And what do we mean by majority of the seats? It means that the total number of elected members will be divided by 2 and then 1 will be added, and in this way we got number 272. This is the number of seats, or we can say number of MPs, number of members of Lok Sabha which are needed to form the government. And if any political party wins 272 or more than seats in the Lok Sabha election, then that party will be able to form the government, as happened in the election of 2019. We see that the BJP got 303 seats and it formed the government. But there are such situations in which no political party is able to win this 272 seats. Then what would happen? In that case, what happened that more than one parties come together and then they reach that mark of 272 and then they form the government, and this type of government is known as coalition. And for this coalition government, the political parties form alliance also. Like sometimes this alliance is pre-poll, है ना, before polling ही alliance बन जाती हैं. Sometimes the alliance is made after the polls. After the result, it comes to the notice of the political parties that they are not able to get the majority of the seats, so there is need of alliance. So in this way, we have seen that in 2009, in the election of 2009, what happened that no single party was in a condition to form the government, because the Congress, Indian National Congress, emerged as the single largest party. It was largest party, but it was not the party which got the majority of the seats. It got only 206 seats, है ना? So BJP was also able to get only 116 seats. So in that situation, no single party was able to form the government. So what happened that so many parties came together with this INC and they formed the government. Actually उस समय पहले से ही एक alliance बना हुआ था. As I told you in the previous class, one alliance was there from before the polling, and this alliance, the name of this alliance was United Progressive Alliance, in which the main party was Congress party, है ना. And the another alliance was NDA, which is still today we find these two alliances are there in our politics. The NDA is National Democratic Alliance, in which the BJP is the main political party. So now we have completed this, and I don't think you have any confusion in this. Now what you need to understand is who becomes the Prime Minister, है ना. प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? Who becomes the Prime Minister? So we see, actually Prime Minister is the leader of the majority party in the Lok Sabha. Whoever party wins the majority of the seats, the elected members of that party will
elect, they will not elect, it's not a kind of election, they will choose their leader, who will be their leader. And whosoever the elected members of that particular party choose as their leader, he or she becomes the prime minister. Got it? जिस पार्टी को भी बहुमत मिला, ठीक है, वो उस पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा में, वो मिल करके अपने लीडर को चुन लेंगे, और जिसको भी वो लीडर चुनेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनता है. जैसे सपोज वी हैव सीन इन द इलेक्शन ऑफ 2019 द बीजेपी गॉट 303 सीट्स. ओके, नाउ हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर? Many times ऐसा भी होता है कि it is decided earlier, before the election it is decided that who will become the prime minister, but it is not always the case. Many times it is decided after the election, when a party wins the majority, then the members of elected members of the Lok Sabha decide that who will be their leader, है ना. और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, वो जिसको भी अपना लीडर डिसाइड करेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनता है ना. जैसे अगर 2019 के इलेक्शन को हम देखते हैं, तो 2019 के इलेक्शन के टाइम में पहले से ही इट वाज डिसाइडेड, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में बीजेपी जीत चुकी थी और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे. 2019 में भी जब इलेक्शन होता है, बीजेपी वाज द विनर, 303 सीट्स मिलते हैं, और इस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है. लेकिन वो भी एनडीए की गवर्नमेंट कहलाती है. हालांकि बीजेपी को सपोर्ट है मेजॉरिटी का, बट द गवर्नमेंट जो है वो एनडीए की है, ठीक है, कोalition में ही गवर्नमेंट बनी हुई है. तो जो भी मेंबर्स थे उन्होंने नरेंद्र मोदी को ही प्राइम मिनिस्टर चुना, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बने. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो भी एमपीज़ होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, जिसको मेजॉरिटी मिली है, उसके एमपीज़ मिलके अपने मिनिस्टर को, अपने नेता को चुनते हैं, और वही नेता प्राइम मिनिस्टर बनता है. ठीक है. अब इसमें एक चीज़ और आती है. सपोज जब कोalition, when coalition is there, when more than one parties are involved, more than one parties are making are forming the government, then in that situation the members, elected members of both the parties or whatever parties, जो भी coalition के पार्टी हैं, जिन्होंने भी मिलकर के कोalition बनाया है, उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन सबको किसी एक लीडर पे उन सबको डिसाइड करना पड़ता है कि यही हमारा लीडर होगा, और वही उस कोalition गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बनता है ना. तो कोalition गवर्नमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज डिफरेंट पार्टीज मिले हुए हैं. अब हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी और को लीडर चुनना चाहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी और को लीडर चुनना चाहे, तो इन दैट सिचुएशन देयर इज सम प्रॉब्लम्स आती है. बट जिसको भी सारे लोग मिल करके एज अ प्राइम मिनिस्टर अपना चूज़ करते हैं, एज अ लीडर चूज़ करते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है. ओके. एंड जब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है कोई एक जने को, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जिसको मेजॉरिटी मिली है, उसने डिसाइड कर लिया कि किसको हमें अपना लीडर चुनना है, उन्होंने चुन लिया अपना लीडर, तो द प्राइम मिनिस्टर इज selected by the elected members of the Lok Sabha, and now the Prime Minister will appoint his ministers, है ना. Prime Minister is will not be able to work alone. He needs a team, है ना. उनको एक टीम की ज़रूरत होती है जिसके साथ मिलकर वो काम करते हैं. ये टीम कौन होती है? इसी टीम को हम कैबिनेट कहते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है. लाइक आई विल टेल यू कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझने की ज़रूरत है. जैसे कि इन ऑर्डर टू हेल्प द प्राइम मिनिस्टर इन हिज वर्क, देयर इज़ वन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, and the members of the council of ministers are called ministers. These ministers are appointed by the president, but the actual work is done by the prime minister. Prime minister select करता है कि किसको हमें as a minister चुनना है. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स को चुनते हैं,
बट उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना मिनिस्टर्स को, वो कौन देता है? दैट इज़ गिवन बाय द प्रेसिडेंट। ऐसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उसमें प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होती है, उनका सील लगता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो भी मेजॉरिटी वाली पार्टी का लीडर है वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बट हिज और हर अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का साइन होगा, प्रेसिडेंट की सील लगेगी, तभी वो अपॉइंटमेंट सही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, है ना। तो इसी तरह से जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर जिनको चुनते हैं, बट उनका अपॉइंटमेंट अगर फॉर्मली देखा जाए तो वो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट का साइन होता है, प्रेसिडेंट की सील लगती है। अब मिनिस्टर्स अपॉइंट करने के बाद उनके बीच में पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, है ना। और इस तरह से पोर्टफोलियो क्या हुआ? डिपार्टमेंट, किसको फाइनेंस डिपार्टमेंट मिलेगा, किसको डिफेंस का डिपार्टमेंट मिलेगा, किसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिलेगा, किसको रेलवे मिनिस्ट्री मिलेगी। ऑल दीज आर डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर एक और बात यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या जो भी मिनिस्टर बनते हैं, वो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो जिस समय उनको प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर अपॉइंट किया जा रहा है, एट दैट टाइम देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट दैट ही और सी शुड बी अ मेंबर ऑफ इधर लोकसभा और राज्यसभा। किसी ऐसे पर्सन को भी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स के फॉर्म में अपॉइंट किया जा सकता है जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन आफ्टर अपॉइंटमेंट 6 months after the appointment, he or she must take the membership of Lok Sabha or Rajya Sabha. Then only he or she can continue to be the minister or prime minister. ओके, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, लेकिन अगर आपका सपोज अपॉइंटमेंट हो जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, then you will have to take the membership of Lok Sabha or Rajya Sabha within 6 months of your appointment. This was the case when Manmohan Singh in 2004, है ना, यही जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट बनी थी और उसमें मनमोहन सिंह जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, बट एट दैट टाइम ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। देन what happened, he has to take the membership of Rajya Sabha within 6 months of his appointment. Okay, so इस तरह के cases होते हैं। Now you have understood how the parliament select the national government. Okay, so now we have completed this important function of the parliament, and so Rajya Sabha is also an important house, one of the two houses of the parliament. And as I told you, Rajya Sabha, as the name denotes, it represents the states of the the country. And in Rajya Sabha there is total members are 245. In this 245, 233 are elected members. These are indirectly elected members who are elected by the members of the legislative assemblies of their respective states. Like from UP, if the members of Rajya Sabha are to be elected, who will elect them? They will be elected by the members of the legislative assembly of Uttar Pradesh. Okay, that is why it is called that they are indirectly represented. They are not the direct representatives of the people. They are elected by the representatives of the people. In legislative assembly, the people elect their representatives, and from this legislative assembly we find that the members of legislative assembly elect the members of the Rajya Sabha. हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो अपने स्टेट के जो मेंबर्स जितने भी उनको दिए जाते हैं उनको वो इलेक्ट करती है. एंड इन दिस वे देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स.
Okay, and 12 members are nominated by the president, the members who have very specific knowledge, very vast knowledge about like literature, or they have gained a name in the field of sports or entertainment. Then these people are in social services or in science and technology, so these people get nominated by the president in the Lok Sabha. They are nominated members, their number is 12. Okay, so this is the how the parliament formed the government. And now we come to the next function or role of the parliament. This is to control, guide and inform the government. The second function of the parliament is to control, guide and inform the government. Okay, now what do we mean by this function of the government? To control, guide and inform the government. So we see that the parliament is the representative body of the people, and as we have seen from this Lok Sabha only, the government is formed. The party which gets the majority forms the government, and the party which gets the majority choose their leader, and this leader becomes the prime minister of the country. So we see that in our system we have parliamentary form of government, and under this parliamentary form of government we find that the parliament and the executive are closely related to each other. This is what is an essential feature of parliamentary form of government, in which the legislature and the executive are closely related to each other. How they are related? We have seen one of the aspect that the executive is formed by the पार्लियामेंट ओनली, है ना. एग्जीक्यूटिव का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो लेजिस्लेचर ही कर रही है ना. नाउ वी सी दैट देर इज अनदर कनेक्शन एज वेल, लाइक parliament is the only representative body in a democratic country. So it is very much important to make democracy real that the parliament should be powerful. How this power of parliament is maintained, how the parliament is made powerful? Because we see that our constitution gives the parliament so many tools in order to control the government. It is one of the most important function of the parliament is to control the government. Government is very powerful. यहाँ पर हम जिसको government कर रहे हैं, actually it means the executive, है ना. Government means executive. Executive में कौन आए? Prime Minister, his council of ministers and president. President दोनों तरफ होता है. President is a part of legislature as well as executive as well, है ना. And in our country the president has nominal powers. Nominal means the powers which are not actual, not real power. The real power is with the prime minister, and the president is only for the ornamental, which has no use, है ना. तो एग्जीक्यूटिव हम जब भी कहते हैं, गवर्नमेंट हम जब भी कहते हैं, तो इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. हाउ इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव? फॉर in order to control the executive, so many tools have been given to the parliament. The first and the most important tool which is given to the parliament is to ask questions.
like government has taken any decision, okay, and it's not a kind of arbitrary system of government. It's a democratic system of government in which the government is not free to use its power in its own way. The government the government has to be accountable towards the people. जनता आपसे हिसाब मांगेगी और आपको जनता के मांगे हुए हिसाब का जवाब देना होगा. दिस इज डेमोक्रेसी. आप यू कैन नॉट यूज द पावर इन एन आर्बिट्ररी मैनर. यू हैव टू फॉलो द रूल्स. You have to keep in mind the interest of the people. You have to keep in mind the promises which were made by you at the time of campaigning of the election. So whenever any decision is taken by the government in the parliament, the questions are asked by the members of the parliament. In this you must understand two things. First of all, it's not like that कि the parliament is always in session. हमेशा उसकी मीटिंग नहीं होती है. पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस होते हैं they are not always in session. In our constitution it is written that there should not be gap of more than 6 months between the two sessions of the parliament. So in a year there must be 2 sessions of the parliament, but many times we have 3 sessions, winter session, monsoon session and this summer session. तो सेशन में होने का मतलब उसकी मीटिंग. व्हेन वी से सेशन ऑफ पार्लियामेंट इट मीन्स मीटिंग, है ना. तो पार्लियामेंट हमेशा मीटिंग में नहीं रहती है. 6 महीने में एक बार तो जरूर आएगी, कभी कभी साल में 3 बार भी इसकी मीटिंग हो जाती है. और जब ये मीटिंग में होती है तभी देन ओनली इट कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट. And the next thing which you need to understand about this questioning, this power to question the government, to ask question the government, it is only the members of opposition party who ask the question. The members of Lok Sabha or Rajya Sabha who belongs to the same party which has formed the government, they are not going to ask question from the government, है ना. लॉजिकली यू हैव टू थिंक लॉजिकली. जिनकी सरकार है, सपोज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लीडर मोदी एंड ही इज टेकिंग डिसीजंस एंड डूइंग एवरीथिंग. नाउ if suppose in the parliament, in the Rajya Sabha or Lok Sabha, the members of the BJP start asking question from Narendra Modi, आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना था. तो what will be the situation? That will be a very awkward situation because the members are belonging to the same party. So what happens that it is the one of the prime responsibility of the opposition party to ask question, to control the government, so that it should not misuse its power, it should not go beyond the limitation, है ना. It should use its power and limitation. So this is very important, and we see that on every day when the parliament is in session, every day the first hour from 11 to 12 o'clock is the question hour. ओके 11 से 12 का जो टाइम होता है वो क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछ के एक्चुअली व्हाट इज द एम ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन. द एम इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड in this way the representatives of the people stop the government to misuse its power, है ना. So it's a very crucial task for every MP, and in this, as I told you, the opposition parties play the most important role. But it is also important to understand that there should not be opposition of the government for the purpose of opposition only, है ना. गवर्नमेंट को अपोज करने के का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम अपोज करने के लिए गवर्नमेंट को अपोज करें.
there should be healthy criticism of the government. गवर्नमेंट को तंग करने के लिए, ताकि वो काम ना कर सके, अगर कोई वो अच्छा काम कर रही है तो भी उसमें हम सिर्फ और सिर्फ उसको क्रिटिसाइज करें, दिस शुड नॉट बी डन. दैट विल बी अगेंस्ट द दिस आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी, है ना. सो अ हेल्दी कंट्रोल इज सच इन विच the positive functions of the government are also appreciated, as well as the negative function or the functions which need criticism, that those must be criticized, but the functions which are to be appreciated must be appreciated. That is a healthy functioning of a democracy. So this is an important function of the government of parliament. It also guides the government. How does it guide? How does it inform? इससे हम क्या मीन कर रहे हैं? Because the parliament is what? Representative body. It represents the interest of the people. It represents the demands of the people. So all the representatives, all the members of the parliament, or we can say all the members of the Lok Sabha are actually representing the members of their constituency. So when they ask any question, when they give feedback to the government, actually it is the opinion of the people of their constituency. So in this way, the government is guided about what is the aspirations of the people, what are the demands of the people, है ना. So this is guidance. The house is there to guide the government in which direction it should move, what important decisions it should take, how what concern should be there in taking the decision, है ना. तो इसके लिए वो उसको गाइड करती है, उसको लोगों की क्या ओपिनियन है ना, उससे उसको अवेयर कराती है. सो इन दिस वे पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट पे कंट्रोल करती है, गाइड करती है, उसको इन्फॉर्म करती है. एंड हियर you must understand one more thing which is very important, that the government is in power only when the government has the support of the majority of the members in the Lok Sabha. The moment the government loses the majority support of the majority, it loses its power. गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट नहीं रह जाती है जिस मोमेंट उसको 272 से कम उसकी सपोर्ट हो जाती है. तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल जो पार्लियामेंट के हाथ में है, थ्रू विच इट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन. So what do we mean by no confidence motion? No confidence motion means that the majority of the parliament is of the opinion that the government is not doing according to the interest of the people, or or in any way which is not in favor of the country, or on any ground it can pass this no confidence motion. And if this no confidence motion is it gets the support of 272 members, then the government will lose, the government will be dismissed, खत्म हो जाएगी वो सरकार जिसके भी अगेंस्ट ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन आता है और पास हो जाता है. पास होने के लिए इसको 272 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए. तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही आता है, जो भी अभी गवर्नमेंट काम कर रही है उसके अगेंस्ट ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को 272 मेंबर्स उसको हाँ कह देते हैं कि यस वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट गिर जाती है और उसके बाद फिर से एक नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. एंड इफ द members are not able to form a new government, if the political parties are not able to form a new government, then there will be
midterm election also. So in this way we can say that the government, the parliament controls the government. And now we will see the next function of the parliament. The next function is lawmaking. As I told you earlier also, the main function of the legislature is lawmaking. But here in this chapter we are not going to discuss about it in detail. In the next chapter we will be discussing about this lawmaking process in detail. There you will understand it in a proper manner. So this is all with the role of the parliament.